Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. I'm going to start today with you a first chapter of 10th CBSE and state boards. The name of the chapter is Light. Well students, first of all, I would like to give you its what do you call that introduction, correct? I would like to introduce you. Introduction. You know, students, light is form of an electromagnetic wave. Light is a form of what? Electromagnetic wave. Electromagnetic wave. अब आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों ही प्ले करते हैं रोल. ओके, इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है. अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर ये वेव क्या होती है? बहुत सही क्वेश्चन है. वेव इज ए डिस्टर्बेंस. Wave is a disturbance, which travels, mechanical wave travels by means of media, and electromagnetic wave does not require any media. When you will move into the 10+2, I will be explaining you the various theories of light. If you go to the channel right now, go to the playlist, you will find wave optics and you will find one lesson there, one video there. But that is in class 2. So electromagnetic wave, in fact light is an independent, a character then mechanical wave. For mechanical wave we need a medium, but for electromagnetic wave we do not require any medium. So light can travel from one point to another. In fact light is an indispensable tool. Indispensable tool, which makes it possible for us to explore only the colorful, beautiful, endowed by the nature around us. Indispensable tool. Without light हम ये खूबसूरत दुनिया नहीं देख सकते.
विदाउट लाइट मेरा ये वीडियो ट्रांसमिशन बाय यूट्यूब और बाय एनी अदर वे आप नहीं देख सकते। विदाउट लाइट आप क्या होंगे बताओ जरा, अंधेरा ही अंधेरा, यू नो। सो लाइट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, you know, in day to day life. I'm introducing light. Light is also playing a very important role in communication. Now you will put a question, sir, communication kaise? How light is playing a role in communication? सर वो कम्युनिकेशन मतलब जैसे हम टॉर्च दिखा देते हैं ऐसे 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 ऐसे, या रेलवे में खलासी जब ट्रेन निकलती है तो वो लाइट दिखाता है ऐसे ऐसे, या बोलो तो वो क्या बोलते, पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे कि माल वर्सोवा बीच पे पहुंचेगा और दिखाते वो शिप में दूर से ऐसे ऐसे लाइट मार रहा था टॉर्च, इधर से भी पुरानी ओल्ड हिंदी मूवीज में आपने देखा होगा। वो कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब है जब मैं बहुत सारे स्कूल्स को विजिट करता हूं, मैंने देखा है कि सड़कों के लेफ्ट राइट में एक लेबर काम कर रही होती है और एक थिक मोटी सी वायर ऑरेंज कलर की बड़े से रोल से वो मशीन से बिछा रहे होते हैं। कभी आप ट्रेवल करो तो आपको हाईवे या ग्रामीण सड़क योजना प्रधानमंत्री जी की जो है उसमें या स्टेट हाईवे में साइड में एक 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 ऑरेंज कलर की मोटी सी वायर साथ साथ जाती दिखेगी आपको। मालूम है वो क्या है? वो ऑप्टिकल फाइबर है। दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना स्टूडेंट्स, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब आप बोलेंगे सर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? उसके लिए जब आप 10+2 में आओगे बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा। वैसे अभी वीडियो भी पड़ी है। जो बच्चे 10th में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, सभी होते हैं, मेरे तो सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन गो टू माय वेब ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट, वहां जाके वो दे कैन गो टू द ऑप्टिकल फाइबर टॉपिक। आप चाहो तो साइमल्टेनियसली +2 में तक मार सकते हो बॉस, और यही एक स्मार्ट तरीका है पढ़ने का। एनीवे, तो इट्स वेरी easier to have, I mean, communication through light, through electromagnetic signal which passes through the optical fiber. अब हम चलते हैं 10th में। इस चैप्टर में हम पता क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम रिफ्रैक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम प्लेन मिरर को स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम प्रिज्म, लेंजेस, राइट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, आई, साथ में उनसे रिलेटेड
न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। गुड स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि मैं ना लंबी वीडियो डालूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट वीडियोस ठीक है, 10-10 15-15 मिनट की, है ना। तो दोस्तों ये है लाइट का इंट्रोडक्शन फॉर 10th लेवल। अब एक क्वेश्चन आता है, लाइट है क्या चीज? व्हाट इज लाइट, है ना। वीडियो नंबर 2 में करें तो चलेगा, राइट। थैंक यू। फर्स्ट वीडियो इज इंट्रोडक्शन।